एक सेकंड अपलोड कर लो। अच्छा चलो ये स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द पी सबसे जल्दी जल्दी बताओ, फास्फोरस सल्फर और क्लोरीन। और ये ग्रुप 5 है, ग्रुप 6 है और ग्रुप 7 है। वैसे डायरेक्टली बता दो। 5 में कितने होते हैं आउटर शेल में? P1 H2P3 नहीं होता? टू, हाँ 5। P3, फिर P3 P4 ऐसे ऐसे S2P3 होता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द पी सबशेल वो 3 होंगे ना। और ये फिर हो अगला हाँ, दैट्स गोइंग टू बी 4। अगले में 4 एंड देन अगले में 5। अब वो कह रहा है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो कितने हैं 3 में? P3 होगा तो कितने अनपेयर्ड होंगे? अगर P3 होगा, तीन, एक 3 अनपेयर्ड होंगे ना। Px हाँ, Py Pz में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, एक एक क्लियर है। इलेक्ट्रॉन। और P4 होगा तो क्या होगा? इसमें दो, हाँ क्योंकि इसमें Px Py Pz में एक में पेयर्ड होगा, बाकी दो में अनपेयर्ड होगा। हाँ मतलब वो 1 1 1 होके। हाँ हाँ, फिर उसमें एक में दो चल चलेंगे। हाँ। और P6 में तो वो जीरो होने चाहिए ना। किस वाले में? P6, ठीक है, P6 जो है वो। उसमें जीरो होने चाहिए। नहीं, Cl7 है ना, उसमें एक अनपेयर्ड होगा ना। सॉरी P6 हम्म, मैंने गलत देखा, P5 है। हाँ ठीक है ठीक। ठीक है। बाकी उसे कंप्लीट शो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द पी सबशेल एंड द टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन एन आटम। अच्छा वो हो गया। कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की इक्वेशन क्या होगी फास्फोरस की? वो P++1 ही। ठीक है, मतलब ये गैसेस हाँ वो गैस। गैसियस स्टेट में। एक इलेक्ट्रॉन ये रिमूव हो गया, N+1 ही, ठीक है। हाँ। अच्छा नेक्स्ट। थ्री पॉसिबल वैल्यूज फॉर द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ सल्फर गिवन। सल्फर की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जीज। रिमेंबर सल्फर ग्रुप 6 में, ठीक है। एक्सप्लेन सर्कल द करेक्ट है, सर्कल द करेक्ट वैल्यू। तो वो कह रहा है कि आई रिमेंबर यू अक्रॉस द पीरियड, राइट? एंड ही इज टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। मुझे तो पहले पहले तो बताओ अक्रॉस द पीरियड व्हाट हैपेंस टू द आयनाइजेशन एनर्जीज। मतलब क्या होता है? ग्रुप 1, फिर ग्रुप 2 होता है, फिर ग्रुप 3 पे देयर इज अ डिप, फिर देन यू गॉट ग्रुप 4, ग्रुप 5, फिर 6 पे डिप है, 7 7 है, इंक्रीज, 8 और पे पीक 8 है। होती तो है। ये फास्फोरस है, ये सल्फर है और ये Cl है, राइट? तो बेस्ड ऑन दिस ट्रेंड अक्रॉस द पीरियड, ठीक है, तो बताओ कि ये क्या होगी इसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इन तीनों Spin में। pairs. मरियम क्या होगा? The value, I think it would be 1000. ठीक है 1000, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी लेस देन द अदर टू, ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी लेस देन बोथ ऑफ देम। तो 1000 है, ठीक है। और अब वो कह रहे हैं कि यू हैव टू एक्सप्लेन योर चॉइसेस, इट्स अ 4 मार्क क्वेश्चन। तो बताओ कि व्हाई इज देयर अ डिप एट। अब इसके अंदर पूरा फुली एक्सप्लेन करो व्हाई इज देयर अ डिप एट सल्फर। Is it because of spin pair repulsion? हाँ, स्पिन पे रिपल्शन उसमें बताना है कि compared to phosphorus, electron in sulfur is removed from a paired p subshell and there is spin pair repulsion, ठीक है। So it's easier to remove electrons, ठीक है। उसका भी थोड़ा सा ऐड कर लो। while sulfur also has spin pair repulsion, लेकिन sulfur has more protons, ठीक है। तो इसलिए sulfur is higher than, sorry sulfur नहीं है, क्लोरीन है। hence chlorine is higher than sulfur, ठीक है, क्लियर है। Yes. अच्छा फिर नेक्स्ट वन है इसके 4 मार्क्स पे भी, एक सेकंड, 4 किस चीज के बन रहे हैं एक्सप्लेनेशन? हाँ वो बीच में ना दे आस्क फॉर वन वन लाइन एज वेल, व्हिच इज के एक सेकंड पे गेट रेड ऑफ दिस। अच्छा दे आस्क फॉर वन लाइन एज वेल व्हिच इज के hence because of that sulfur attracts the electrons less। मतलब ये
इसका वो 1 मार्क उन्होंने रखा होता है, ठीक है। जस्ट 1 सेकेंड, 4 मार्क्स उसके देख लें, मेरे 4 मार्क्स कहाँ चला गया। अच्छा, 1000 का 1 मार्क है। न्यूक्लियर अट्रैक्शन लेस, ठीक है, तो वो उसका 1 मार्क है। स्टील का उसने वो कहा ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, सो दैट्स फाइन। और स्पिन पे रिपल्शन, ठीक है, दैट्स द फोर्थ वन। ठीक है, वो 1 मार्क उसका हमेशा होता है कि यू हैव टू मेंशन दैट इट हैज अ, सबसे कम है, सो दैट मींस इसका अलग से मार्क होता है, ऑलवेज राइट दैट, ठीक है, पीपल फॉरगेट टू राइट दिस, जो कि ऑब्वियस है। अच्छा, नेक्स्ट वन, P3 -1 full electronic configuration. P is 15 electrons, तो कितने हो गए? 18 की क्या होगी full electronic configuration? That's what, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, बस यही है, पूरी होगी या कुछ और भी है? तो I think that's 18, right? अच्छा, इसका बताओ कि which the trend in ionic radiuses, which one do you think is the smallest, which one is the biggest, and why? क्या है इसका इब्राहिम, क्या होगा? मरियम, अयान, कोई आइडिया? यस और नो? um हम्म। आयोनिक रेडियस जो है, सेकंड, एक इलेक्ट्रॉन नहीं, अगर कम कम होता, लाइक एक कम होता जा रहा है, सो दैट मींस का आयोनिक रेडियस बढ़ना चाहिए, मे बी। I'm writing the proton numbers, 15, इसके 15 protons है, इसके 16 है, इसके लेकिन इनका आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन भी कम होता जा रहा है। ज्यादा होता जा रहा है, माइनस चार्ज है। नहीं, लेकिन वो -3 है, और फिर वो -2 है, और फिर वो माइनस माइनस है। तो बताओ ना, सारों में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कम हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं? तो उसमें लाइक 18 है। हाँ, इन 2 सेकंड, उस अच्छा इन सारों में 18 है। अच्छा, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ऑल 18, ठीक है। ठीक हो गया, ठीक हो तो गया। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन वाइज तो दे हैव एग्जैक्टली द सेम साइज। और सही है, इसका मतलब आयोनिक रेडियस कम होना चाहिए, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज जो है आपका बढ़ रहा है। हाँ, तो बेसिकली आप बताओगे कि वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, दे ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और शेल्स, लेकिन ये छोटा हो गया, 17 प्रोटॉन्स, 16, 15, ज्यादा कौन अट्रैक्ट करेगा? इट्स गोइंग टू बी, सो यू गेट मोर प्रोटॉन्स, तो मोर न्यूक्लियर अट्रैक्शन, ठीक है, सो स्मॉल हो रहा है। क्लियर है ये? रिमेंबर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वो कहता है कंपेयर करो ना, तो फॉर एग्जांपल यू माइट कंपेयर लिथियम विद, नहीं, लिथियम तो नहीं कंपेयर करना कहेगा, लेट्स से वो फ्लोरीन, नियोन और सोडियम को कंपेयर करता है। अब इन तीनों को, तो इन तीनों का ना, दे ऑल हैव एग्जैक्टली 10 इलेक्ट्रॉन्स, ऑल ऑफ देम। सोडियम के पास 11th है, नाउ इट आल्सो हैज 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके 9 प्रोटॉन्स, इसके 10 है, इसके 11 है, ठीक है, तो सोडियम वुड बी द स्मॉलेस्ट, क्योंकि 11 जो प्रोटॉन्स है ना, दे गोइंग टू अट्रैक्ट द 10 इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली, ठीक है। क्लियर है ये? सर वैसे हम प्रायोरिटी किसको देंगे, वैलेंस शेल को या न्यूक्लियर चार्ज को? ये क्वेश्चन जो कंपैरिजन में आएगा ना, वो दो टाइप्स के आएंगे, ठीक है, क्योंकि वो कंप्लीटली रैंडम नहीं आएगा। या तो वो आएगा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक, दे ऑल हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो फिर तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे ना, कि इसके ज्यादा प्रोटॉन है तो इट्स गॉट स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो ये छोटा होगा साइज में। ध्यान, क्लियर है? जी सर। अब दूसरा ये कि वो डाउन द, अब वो अक्रॉस द पीरियड भी आ सकता है कि अक्रॉस द पीरियड क्या होता है? when you move across the period, what happens to the shell? वो सेम ही होता है ना, लिथियम है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी 2 and 1, राइट, और दूसरे एंड में फ्लोरीन है, दैट्स 9 इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या है, 2 and 7, राइट। अब ऑब्वियसली ये बाइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, इनके इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट है, लेकिन दे हैव द सेम नंबर ऑफ शेल्स।
इनमें मुझे बताओ कौन सा ज्यादा छोटा होगा। किस शेल सेम है, शीलिंग सेम है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है, ज्यादा होते जा रहे हैं। ज्यादा। तो, तो इसलिए ये छोटा होगा अक्रॉस द पीरियड। आयनिक आयनिक नहीं, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है, ठीक है। और एक आ जाता है डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप ऑब्वियस है, डाउन द ग्रुप ऑब्वियसली शेल्स इंक्रीज करें तो बाकी फैक्टर्स पर रिलेवेंट है। इफ योर शेल्स आर इंक्रीजिंग यू बिकम बिगर। क्लियर है बात। जी। तो वो Yes. रैंडमली, हाँ तो वो रैंडमली किसी इन तीनों में से किसी एक का पूछेगा। either it's going to be isoelectronic, they all have the same number of electrons, तो उसमें बस जो लार्जेस्ट प्रोटॉन होंगे ना, दैट्स द स्मॉलेस्ट। अक्रॉस द पीरियड तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस क्योंकि शेल्स रिमेन द सेम, लेकिन प्रोटॉन्स इंक्रीज है डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो इसका ये ग्रुप 17 का आ गया कि वो क्या है, NaCl में ना ब्रोमीन ऐड किया। मुझे बताओ ब्रोमीन NaCl को Cl को डिस्प्लेस करेगा। Yes, there will be white precipitates. इज ब्रोमीन मोर रिएक्टिव देन Cl? Yeah. नहीं, ग्रुप 17 किधर है? ब्रोमीन इज नॉट रिएक्टिव। कहाँ गया इनऑर्गेनिक की? But is that bromine or bromine water? Same thing, it's Br2, it's Br2 aqueous. तो मतलब ग्रुप 17 में के Oh, sorry. ठीक It है। is unreactive. There is no reaction because you have saturated bonds there. You have what? Saturated bonds, single bonds. There are no double bonds. नहीं, it's because bromine is a weaker oxidizing agent. Bromine is less reactive. Down the group reactivity कम होती है ना। तो Alright. bromine will not be able to oxidize Cl ions. Bromine will not be able to just a second. अच्छा bromine, ये दिमाग से अच्छा, bromine will not be able to displace Cl ions or oxidize it. मतलब इसमें NaCl में Cl ions होंगे, so there's not going to be any reaction, ठीक है। Okay. Down the group वो tendency to attract electrons decreases, right? तो अच्छा, इसका क्या होगा? एडिशन ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ H2SO4 Misty which, fumes because of hydrogen chloride. हाँ तो उसके अंदर you're going to get displacement, no redox reaction because Cl-1 is a terrible reducing agent. छोटा atom जो होता है doesn't like to lose electrons, ठीक है। So when it comes to losing electrons, Cl-1 reducing agent जो strong होता है ना, they're down the group. The Cl-1 के साथ the only thing that will happen is that there's going to be a displacement reaction in HCl. Fumes, misty white fumes are going to be produced, ठीक है। Cl ions and H+1 will combine and they'll form HCl fumes. तो वो ऑब्जर्वेशन होगी। अच्छा नेक्स्ट वन, अच्छा नेक्स्ट वन इज व्हाट इफ यू ऐड सिल्वर नाइट्रेट। अब बताओ इस Cl ions के साथ क्या होगा? व्हाट विल दैट डू? क्या होता है? Cl ions का टेस्ट है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट के केस में क्या होगा? Cl ions इट्स गोइंग टू गिव यू Ag प्लस में डालोगे, इट्स गोइंग टू फॉर्म अ वाइट प्रेसिपिटेट। वो अमोनिया वाला पार्ट छोड़ दो, पर इट्स गोइंग टू गिव यू अ वाइट प्रेसिपिटेट। इज दिस क्लियर? वॉल्यूम क्लियर है? यान क्लियर है? जी सर। Yes, sir. अच्छा अगला वाला POCl3 shows similar chemical properties to PCl5. POCl3 has a melting point of 1 centigrade, low melting points. POCl3 reacts vigorously with water forming fumes and an acidic solution. Explain how the formation in D suggests the structure and bonding is simple covalent. कितना पता लगा it's simple covalent? बस दो रीजंस बताओ। हाउ डू यू नो सिंपल कोवलेंट का क्या होता है? उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं? लो होते हैं। तो which indicates that it's got weak intermolecular forces, ठीक है। that's one reason. The other one is कि कोवलेंट क्लोराइड्स जो होते हैं ना, दे हाइड्रोलाइज रैपिडली, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस कोवलेंट क्लोराइड्स का होता है कहाँ पे? कोवलेंट क्लोराइड्स आयोनिक क्लोराइड्स होते हैं, दे जस्ट डिसॉल्व। NaCl मोस्टली डिसॉल्व्स, MgCl2 मोस्टली डिसॉल्व्स। कोवलेंट क्लोराइड्स जो होते हैं दे स्ट्रांगली स्टार्ट हाइड्रोलाइजिंग एंड रिएक्टिंग विद वाटर, ठीक है। तो बोथ ऑफ दीज इंडिकेट कि भाई वो
It's covalent. और फिर उसका रिएक्शन भी बताना है वाटर के साथ. So what did he say? He said that misty fumes are formed, which is what? HCl? और acidic solution. मुझे तो guess करो acidic solution कौन सा होगा? What is the acidic solution formed? Phosphoric acid. ठीक है, so that's phosphoric acid. Remember, ये +5 oxidation state. So the acid that will be formed will have an oxidation state of +5, and you can balance this. POCl3 contains a double covalent bond between P and O. तो बना दो यहाँ पे. They've got a double covalent bond. तो P के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 होते हैं. तो 2 इधर शेयर कर दिया, तो rest of the 3 will be shared by the rest. और वो Cl के remaining electrons draw कर लो. तो I think that's the 6. इसके भी 6. और oxygen के shaded कर लेते हैं. So oxygen will have, out of 6, it's going to have 4 electrons left. ठीक है, clear? Clear है कि नहीं clear? जी सर, समझ गया. जी सर. अच्छा, उसके बाद है कि अच्छा, उसके बाद PCl3 एक reaction is given. हाँ, ये जो क्वेश्चन है ना, दिस वन, उससे क्या है कि पहले तो डेफिनेशन बताओ. व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? कोई बता दे. It's when 1 mole of a compound is formed from its elements under standard conditions. Under standard conditions, ठीक है. 1 mole of compound is formed from its elements under standard conditions, ठीक है. ये कोई सॉल्व कर करता है. दिस इज कितने मार्क्स हैं? वैसे 2 मार्क्स हैं, लेकिन इट्स वेरी ट्रिकी दिस वन. वो कह रहा है by using this information, only this information. और रिमेंबर उसके पिछले पेज पे ना he did draw the structure of POCl3, ये वाला जो है ना. उसने कहा था कि वो ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है और 3 Cl थे ना. अब मुझे बताओ कि how would you solve this? I think we're gonna make a Hess cycle. ठीक है, how are you going to do that? The equation up there, like 2PCl3 plus O2 will give you 2 POCl2. हाँ, इसको क्या करें? And How? write the elements under it. So here I'm going to write the elements underneath it, right? What are the elements? That's Phosphorus. phosphorus and Cl2 and Yes, O2. and oxygen. And there is कितने Cl2? 3 Cl2? And there are 2 phosphoruses, right? Yes, yes. Arrow की डायरेक्शन उल्टी होनी चाहिए थी वैसे. This direction, right? No. Down. So ठीक है, breaking. What is the value of this? Like enthalpy change value? And isn't there going to be another arrow that is leading up to the product from the elements? ठीक है. So you got this arrow. Tell me the values for Yeah. these arrows. Okay, so let me just get my calculator. हाँ, लेकिन वैसे इसकी इन दोनों arrows की value. Okay, so we have minus 289 times 2. ये PCl3 minus 289 plus 289 होगा. Plus 289. Why? Because you're not forming it, you're turning it back into elements. So we're not going to use this value that is in the table. नहीं, it's not going to be minus, it's going to be plus. Minus थी formation की ना. अगर arrow इस direction में होता ना, going towards PCl3, that was formation. Oh,
All right. That is 578. And what is this? Um, 2 times. Is this going to be positive or negative? You tell me. I You're mean, are we forming. using You're minus? forming. You're forming POCl3, right? Oh, okay, so we are going to use minus. So the answer is minus 1184. Into 2. Yeah, into So what do you get from this? You minus. get the enthalpy change of the above reaction, right? Yeah. ठीक है, you got the enthalpy change. What is the enthalpy change? ये इसका वैसे simple formula भी. Instead of drawing the Hess cycle, you can simply. I told you that if you know the enthalpy of formation of the reaction, Yeah. and you know the enthalpy of formation of the products, it's simply product minus reactants, right? So it's products, which Yes, is yes. minus 592 times 2, Yeah. minus the reactant, which is minus 289 times 2. O2 formation Yes. is 0, right? So you get You the said same. it will be positive. What do you get for this? It is positive. Minus minus is going to be. Okay. So what do you get? You got the enthalpy change of this reaction, right? So what is the enthalpy change? Yes. Okay. That is 578 minus 578. Okay, positive 578. Yeah, I think it's going to be minus. Because I don't think the direction Okay, of minus arrow really minus for matters. term. Huh? Does the direction of arrow really matter? Like if you're drawing the Hess cycle, it really matters. Okay. You get this. No, I mean like in calculations. Yes, obviously it matters. Okay. मैं बताता हूँ ना. Okay. This was the direction of the original arrow, right? Because it was formation of PCl3, right? Yes. So the arrow was going in this direction. Now, if you apply the Hess rule, which is that one path is basically equal to the other path, Yes. right? So उसमें फिर you're not going to go in this Yes. direction, go in the opposite direction. So it's going to turn plus 289 times 2. Yes. So anyways, instead of drawing the Hess cycle, you could have simply used the formula which I wrote above. Oh, okay. So But it was the enthalpy of formation of the products minus the enthalpy of formation of the reactants, right? Clear? the And you would answer is minus 606. कितना minus 6? 106. So you're getting minus 606 kilojoules. ठीक है. But that's not what we're looking for. We're looking for the P double bond O bond energy. Oh. अब बताओ, How are we gonna get that? how would you find the P double bond O bond energy? But this is going to be useful because the enthalpy change of the reaction was not known. Now we know the enthalpy of the reaction, right? तो एक तो ये formula है ना. I think One of the formula is it's still correct. which one? Like, you know, enthalpy change of formation plus the enthalpy change of formation will give this enthalpy change of formation, like the product minus reactant, but one of the reactant is missing. So you make the reactant the subject of formula. No. One of the reactors is not So I missing. think You it's know still correct. you know the enthalpy of formation of O2. That's elements enthalpy of formation is 0. 490. इसका Oh, पता है हमें. ठीक है, is this clear? Okay, yes. we know about this, right? Even though it's not given, we know that it's 0. तो ये तो मैं ये कह रहा था कि you draw the Hess cycle or you write the formula, you're going to get the same answer. ठीक है, is this clear? But my question is not okay, they weren't even looking for this. They're asking for the P double bond O bond energy. तो bond energy का क्या formula होता है enthalpy change का? Bond breaking minus bond forming. ठीक है, so bond breaking minus bond forming, right?
So can you Which figure is the out how same thing as reactant. Product minus reactant. No, that was for formation only. That's a different formula. ठीक है इधर क्या है bond breaking minus Bond forming. bond forming, right? इधर ये होता है कि I mean obviously it's reactant bonds that you're breaking and it's the product bonds that you're forming, right? Is that clear? So but it's kind of reactant minus Yes. this, but it's basically bond breaking minus bond forming, right? So you know clear that these two are completely different formulas. That's for enthalpy of formation. This is for bond breaking and bond forming, right? They're completely two different ways of finding enthalpy change. इस reaction में मुझे बताओ how many bonds did you break? See, here's PCl3, right? There's O double bond O, and that's your product on the other side. So बताओ how many bonds did you break? But you're going to break the reactant bonds, right? तो कितने तोड़े हैं? There are two molecules of PCl3, so that's 6 PCl bonds that are broken, right? Is that clear? Yes. And then there's an oxygen molecule bond that's going to be broken as well. So that's one O double bond O as well, right? Is that clear? अच्छा आप फॉर्म कितने कह रहे हो फॉर्म क्या कह रहे हो and again there are two molecules equation में these are two molecules so you're forming 6 PCl bonds और P double bond O bonds कितने form करो you're forming 2 of them और सॉरी ये एक्सोथर्मिक होगा bond formation है so your bond formation part is exothermic ये clear है कि so this is the formula for bond energy right is this clear Yes. अब मुझे तो इसमें कौन सी चीज कैंसिल आउट हो रही है 6 PCl minus 6 PCl so that gets cancelled out because you're breaking 6 PCl bonds and then you're forming 6 PCl bonds again तो ये जो PCl वाला part है ना that gets cancelled out ये clear है कि PCl वाले bonds they get cancelled out is that clear Yes. तो बताओ अब आपकी enthalpy of reaction in terms of bond energy is very simplified वो क्या है it's just O double bond O minus 2 times ये आ गया ना और उसने कहा था कि this is ये फाइंड आउट करनी है बल्कि 2 भी नहीं P double bond O is the one that he's looking for यहाँ तक clear है this is what you're looking for is this clear Yes. O double bond O की bond energy is given ये दिया हुआ ना O2 turning into 2 oxygen atoms right तो यहाँ पे क्या किया it's basically O double bond O that's being broken so that's what 496 is this clear Yes. minus 2 times अच्छा फिर आपको Well, we need to know the reaction the to choose a enthalpy of reaction. the enthalpy of this reaction you need to know that and that is what you just calculated that's minus 606 Minus 606. now you can find P double bond O so ये 2 है बीच में ठीक है तो इसको जरा कैलकुलेट करो व्हाट यू गेट फॉर P double bond O Minus 1102. तो -1102 ठीक है तो ठीक है अच्छा so the No. point हाँ Won't that be divided by 2? I didn't divide by 2. हाँ वो डिवाइड बाय 2 भी होगा 551. अच्छा क्वेश्चन ट्रिकी इस तरह था कि बेसिकली व्हाट यू हैड टू डू वाज कि you had to find the enthalpy of this reaction using two methods एक मेथड से निकल आती थी which was enthalpy of formation of products minus enthalpy of formation of reactants or in your case you drew the Hess cycle right so enthalpy of formation of product minus enthalpy of formation of reactants you were able to figure this out and you knew that this reaction had an enthalpy change which was minus 606 right
Yes. फिर हमने इसी रिएक्शन की ना we found the enthalpy again, and this time using the other method, which is bond breaking minus bond forming. तो उससे enthalpy change नहीं निकलती थी क्योंकि we didn't know the bond energies, right? We didn't know one of the bond energies, but we had already previously calculated that the enthalpy of the reaction was minus 606. ठीक है, तो फिर सारी equation and the only unknown is p double bond O, and you were able to find out p double bond O. तो ये क्वेश्चन क्लियर है, थोड़ा ट्रिकी था क्योंकि इसके अंदर एक ही क्वेश्चन पे ना you have to apply two methods to find the missing value. ये क्लियर है? Yes. The final answer is 551. तो 551 ठीक होगा, 551 ठीक है, it's 551 ठीक है. अच्छा, just remember कि I mean drawing the Hess cycle is a good thing, but remember कि formulas are much quicker, ठीक है, उसमें mistake के chances कम है. Unless, तो as long as if you have enthalpy of formation, just apply enthalpy of formation of products minus enthalpy of formation of reactants, ठीक है. और अगर combustion given होती ना सारों की, so then you would have used enthalpy of combustion of product and minus enthalpy of combustion of reactants, ठीक है. तो clear है ये? Yes. चलो ठीक है, ये बाकी क्वेश्चन 22 मार्क्स का हो गया था. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन वाज वेरी बिग. ये फिर हम कल करते हैं ये वाला क्वेश्चन. इसको बस प्रैक्टिस करना, दिस वन एंथैल्पी चेंज, ठीक है, दिस वाज अ टफ वन. ठीक All है, right. चलो Okay, लेट्स sir. कंटिन्यू टुमारो सेम टाइम. ठीक है, Okay. Last. Love. Same time. So, Yep. so can we have it like around 4, like in Pakistan 8, or like something like early? Because I have math lessons by 5, which is 9. ठीक है, तो वी कैन हैव 8. ठीक है, टुमारो एट 8 अगर किसी को, और Okay. वी कैन हैव It's लेटर. 7:30. 7:30 can be good as well. ठीक है, 7:30 वुड वर्क. Okay. Okay. Last, sir.